Welcome back to the another video tutorial from TI Lectures. In this video lecture, we'll be discussing about the causes of cancer. As we know, in the previous lectures, in the previous video lectures, we discussed about what is cancer. We discussed about the types of the cancer, different types of cancer. And this is the third part of the video lecture in which we will discuss the causes of cancer, right? So if we see that जो cancer है, it's not a single disease, it's a group of complex diseases. It's actually a group of complex diseases. It is actually a group of complex diseases. It's not a single disease, it's a group of complex diseases, and there is no single cause for cancer. The important thing I would like to mention that there is no single cause for cancer. कोई एक ऐसी खास वजह नहीं है जिससे कैंसर हो सकता है, लेकिन what scientists believe कि बहुत सारे ऐसे factors, कुछ ऐसे responsible factors, they work together then they produce a cancer. For example, कौन से factors? Like हम बात कर रहे हैं genetic factor. एक factor है genetic factor that is responsible for producing cancer. Lifestyle factor that is responsible for producing cancer. Third one is environmental factor. Environmental factor that's also responsible. And the fourth one is exposure. Exposure to certain viruses and bacteria. So these are some important factors which scientists believe that they work together then they produce a cancer. So हम ये नहीं कह सकते कोई एक सिंगल कॉज है responsible for cancer, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलके काम करके कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं. और कौन से फैक्टर? जेनेटिक फैक्टर इज देयर, लाइफस्टाइल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सपोजर टू सर्टेन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see what kind of genetic factors are responsible for producing cancer. First one, जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, वी नो दैट जो सेल है, इफ वी ड्रा रफ डायग्राम ऑफ सेल, जो सेल है, सेल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली. और उस सेल ऑर्गेनेली में एक जेनेटिक मटेरियल होता है. दैट जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज डीएनए, राइट? दैट जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज डीएनए. एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं. डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो व्हाट वी से कि जो जीन्स हैं दे आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, राइट? एंड दे कैन समटाइम्स म्यूटेट ओवर टाइम टू बिकम ए कैंसीरियस. कभी कभी होता है कि जीन्स में म्यूटेशन आ जाता है. व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन? विल डिस्कस देम इन लेटर सेक्शंस. म्यूटेशन जीन्स में होगा, और जीन्स जो होगा, जिनको जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स. तो जब म्यूटेशन जीन्स में होगा दे विल फॉर्म द डिफेक्टिव प्रोटीन. अब क्या होगा? डिफेक्टिव प्रोटीन से क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहेंगे दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कन्वे द सेल टू डिवाइड, और एक लिमिट होता है जब सेल डिवाइड होती है, राइट? अगर सिग्नल डिफेक्टिव सिग्नल होगा तो सेल जब उसको स्टॉप करना होगा ग्रोथ तो वो स्टॉप नहीं करेगी, देन अल्टीमेटली इट विल फॉर्म ए कैंसर. So that's why we say, but there are different kinds of factors which are responsible for mutation in genes. Like environmental factor is there which is responsible for causing mutation in genes or DNA, or we can say some lifestyle factors are there which are also responsible for causing mutation in genes. So one such inheritable genetic disorder that is associated with increased cancer, that's called as Lynch syndrome. Remember this, very important. Lynch syndrome. This is one kind of inheritable genetic disorder. Remember this, very important. This is one kind of such inheritable genetic disorder which is associated with increased formation of cancer, right? What is Lynch syndrome? Lynch syndrome, what happens in Lynch syndrome? Lynch syndrome which prevents
cells ability to repair their damaged DNA. और जब वो ability cell की खत्म हो जाती है, then cell जो है that forms the abnormal mass of cells and ultimately it forms the cancer. And उस Lynch syndrome से genetic disorder से कौन कौन से cancers produce हो सकते हैं? It may form the cancer of uterus, right, or it may form the cancer of colon. So this was all about the genetic factor which is responsible for causing cancer, right? Now we'll move to the another important factor that is lifestyle factor. Lifestyle factor so lifestyle factor की अगर हम बात करें, lifestyle factor means we know every person nowadays is habitual of smoking, all right, and we know that by smoking which can lead to the lung cancer. That's very important. And we know जो tobacco smoke होता है that's made of thousands of chemicals. tobacco smoke में बहुत सारे thousands of chemicals ऐसे present होते हैं, लेकिन उन thousands of chemicals में ऐसे 70 known chemicals पाए गए हैं. 70 known chemicals ऐसे हैं जिनको रिसर्च आर्टिकल से प्रूव किया गया है कि वो 70 known chemicals कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं एंड वी कॉल देम कार्सिनोजेंस. दैट मीन्स उसका मतलब है कि टोबैको स्मोक में 70 केमिकल्स ऐसे नोन केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं. एंड एग्जांपल हम देते हैं, सिंपल एग्जांपल निकोटीन की, right? This is one of the this carcinogen which is responsible for causing this lung cancer, right? एक और important बात lifestyle factor में आएगा, that's diet and physical activity. That's very important and that we usually neglect. Diet and physical activity. Diet and physical activity means that plays an important role. For example, what we eat, हम खाते क्या हैं, and how active we are. That's very important. What we eat and how active we are. These are also the contributing agents for producing the for formation of the cancer. And especially अगर हम कश्मीर की बात करें, here in Kashmir, role of salted tea. And we know that या high rice intake, बहुत ज़्यादा चावल का लेना, बहुत ज़्यादा rice intake या spicy food होता है या pickled food होता है, right? They are the most worst risk factors for cancer, especially the gastric cancer, right? And important thing I would like to mention here that जो smoked foods होते हैं, smoked foods of beef and mutton in the form of barbecues, जिसको ज़्यादा विंटर में रूटीन बेसिस पे कंज्यूम किया जाता है, उनमें भी एक ऐसा केमिकल बन जाता है, उनको उस केमिकल को एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. And those N-nitroso compounds, they are also found to be the cancer causing compounds. So that's very important कि how we monitor the lifestyle factor, how we monitor the genetic factor. These are two important responsible factors which work together, then they produce a cancer, right? So in the next video lecture we'll be discussing about the third important factor, that's environmental factor and exposure to certain viruses and bacteria. Thank you.